गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है रिफॉर्मिंग नेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक हाई लेवल कमेटी जो कि फॉर्मर इसरो चीफ द्वारा हेडेड थी, उसने कुछ रिफॉर्म्स रिकमेंड किए हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी आ सके इंडिया के नेशनल एंट्रेंस टेस्ट्स को कंडक्ट करने में। ठीक है, ताकि ये जो है ये पैरेलल्स ड्रॉ कर रही है ये कमेटी की रिकमेंडेशंस। जैसे हमारा जनरल इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है, इनका कहना है कि वैसे ही हम जो है एग्ज़ाम प्रोसेस को भी जो है वो कंडक्ट करके मैल प्रैक्टिसेस को रोक सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है। तो 2017 में एक स्पेशलिस्ट सेल्फ सस्टेनिंग और ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाई, जिसको रजिस्टर किया गया अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के। ठीक है, इसके जो डायरेक्टर जनरल होते हैं और गवर्निंग बॉडी होती है, ये यूनियन गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। तो इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें, 2010 में एक कमेटी जो कि आईआईटी के डायरेक्टर्स द्वारा कंप्राइज थी, उन्होंने कहा कि एक ऐसी बॉडी बनाओ, ट्रांसपेरेंट बॉडी, जिसके थ्रू जो है हम जो है एग्जामिनेशंस कंडक्ट कर सकें, जैसे कि एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस यूएस की है। ठीक है, तो अब जो ये एनटीए बनाया गया, ये एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए इसका मैंडेट है। और रिसर्च करता है ये एजुकेशनल, प्रोफेशनल और टेस्टिंग सिस्टम्स के ऊपर भी, ताकि गैप्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें रोका कम किया जा सके। और एक्सपर्ट्स और इंस्टीट्यूशंस को भी आइडेंटिफाई करता है जो कि एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को सेटअप करने में हेल्प करें। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी कहा कि एक ब्रॉडर रोल होना चाहिए एनटीए के पास। ठीक है, अब लेकिन क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली एनटीए में? तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होते हैं वो हमें अ, सही रहते हैं हमारे लिए, क्योंकि उसमें हाई वॉल्यूम जो है बहुत ही कम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में प्रोसेस हो जाता है। लेकिन है क्या प्रॉब्लम कि जो एनआईसी है सरकारी, उसके पास ना तो कैपेसिटी है, ना ही इतना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो इतने एग्जाम्स को कंडक्ट कर सके। इसीलिए जो है एनटीए को थर्ड पार्टी टेक्निकल पार्टनर्स के ऊपर रिलाई होना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट के हाथ से अकाउंटेबिलिटी निकल कर जो है इन थर्ड पार्टी टेक्निकल पार्टनर, जो कि मोस्टली प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, उनके पास चली जाती है। तो लूप होल्स रह जाते हैं उस एरिया में। ठीक है, तो मैन पावर की भी कमी है। जब एनटीए को सेटअप किया गया था तो सिर्फ 25 परमानेंट स्टाफ पोजीशंस थी वहाँ पर। ठीक है, और रॉबस्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स की भी जो है वो एब्सेंस है कि कैसे क्वेश्चन पेपर सेट करना है, एक्सटर्नल प्रिंटिंग प्रेस या एग्ज़ाम सेंटर्स, ट्रांसपोर्टेशन कैसे लेके जानी है, अगर हम पेन ऑन पेपर एग्जामिनेशन की बात करें तो। ठीक है, हर एक स्टेज पर मैल प्रैक्टिस हो सकती है, इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑनलाइन टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, तो अभी हमने रिसेंटली देखा कि नीट एग्ज़ाम की जो है इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई, यूजीसी नेट एग्ज़ाम को भी कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, तो रिकमेंडेशंस क्या दी हैं हाई लेवल कमेटी ने? उन्होंने कहा है कोलैबोरेटिव अप्रोच फॉलो की जाए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, वो इसमें जो है इस एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करने में, स्मूथ एग्जीक्यूशन में एक क्रूशल रोल प्ले कर सकते हैं। हर टेस्टिंग सेंटर जो है वहाँ पर एक एनटीए अपॉइंटेड प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो ओवरसी करने के लिए ऑपरेशंस। टेस्टिंग सेंटर्स जो है उनको सील किया जाए एग्ज़ाम से पहले, और अनसील किया जाए ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एनटीए ऑफिशियल्स, जैसे कि आपके जनरल इलेक्शंस के टाइम पर होता है। ठीक है, फिर कहा गया कि स्टेट लेवल कमेटीज़ बनाई जाएँ जो कि जैसे चीफ सेक्रेटरी द्वारा हेडेड हों, और उसमें रिप्रेजेंटेटिव स्टेट पुलिस के, एनटीए के और इंटेलिजेंस ब्यूरो के और एनआईसी, तीनों इन सब के होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़ बनाई जाएँ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हेड करें, ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके सिक्योर टेस्टिंग सेंटर्स की। फिर कहा गया है कि बैकग्राउंड टेस्ट चेक किए जाएँ सेंटर्स के, ताकि उनको उनके पास्ट रिकॉर्ड्स के बेसिस पर जज किया जाए। और जो प्राइवेट टेस्ट डिलीवरी एजेंसीज हैं, उनके ऊपर जो है रिलायंस नहीं रखनी है हमें। हमें केंद्रीय और नवोदय विद्यालय के साथ कोलैबोरेट करके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। एक डिजी एग्ज़ाम सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि कैंडिडेट की वेरिफिकेशन करे यूज़ करके बायोमेट्रिक डेटा। कॉन्टिन्यूस सीसीटीवी की मॉनिटरिंग हो कैंडिडेट्स की। ठीक है, एनटीए जो है सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम्स जो होते हैं हायर एजुकेशन के, सिर्फ उन्हीं के ऊपर अपना फोकस रखे। रिक्रूटमेंट एग्जाम्स जो है बाकी बॉडीज़ के, उस पर उसका फोकस नहीं होना चाहिए। ये जो है रिकमेंडेशंस हाई लेवल कमेटी ने दी है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की पावर्स को बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एजेंसी की पावर्स सिर्फ उतनी ही नहीं है जितना शेड्यूल ऑफ एनआईए में कहा गया है, और उसके ज़्यादा भी हैं। ठीक है, तो एनआईए क्या है? एनआईए एक्ट 2008 के अंदर इसको बनाया गया,
एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। 2008 के मुंबई टेरर अटैक्स के बाद इसको क्रिएट किया गया है। इन्वेस्टिगेट करती है, प्रोसिक्यूट करती है ऑफेंसेस जो हमारी कंट्री की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी को अफेक्ट करते हैं। तो ये जो है ऑफेंसेस जैसे कि एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस से रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर वेपन्स, अनलॉफुल एक्टिविटीज़, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, हाईजैकिंग, इन सबको इन्वेस्टिगेट करती है, प्रोसिक्यूट करती है। एनआईए की 2009 में एक्ट की अमेंडमेंट करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें आउटसाइड इंडिया भी इन्वेस्टिगेशन करने की पावर्स दी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो एनआईए की होती है वो डायरेक्टर जनरल के पास होती हैं और ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव। ये टॉपिक गवर्नेंस और साइंस एंड टेक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा है कि ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ फ्यूज़ करके ही इंडिया अपनी एडवांटेज जो है ओवर अदर कंट्रीज़ कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जो कि हेरिटेज रिसर्च का के ऊपर एक न्यू प्रोग्राम है, जिसमें कि डाइवर्स फील्ड्स के जो है एक्सपर्ट्स को एंगेज किया जाएगा डेटा कैप्चर और एनालिसिस के लिए, ताकि जो कल्चरल हेरिटेज रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जा सके। अब इसके जो हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्कीम के? कैपेसिटी बिल्डिंग करना ह्यूमन रिसोर्स की और इनकरेज करना न्यू रिसर्चर्स को कि वो हेरिटेज के ऊपर जो है रिसर्च करें। फिर साइंटिफिक आर एंड डी एक्टिविटीज़ जो है हेरिटेज ऑब्जेक्ट्स की कंजर्वेशन के लिए प्रमोट करना। फिर हेरिटेज और आर्ट वर्क्स जो हैं फॉर्मर जनरेशन के, उनको भी प्रिजर्व करके रखना। एडवांस नॉलेज ऑफ आर्क्योमेट्रिक साइंस, आर्क्योमेट्रिक साइंस क्या होती है? आर्कियोलॉजी के ऊपर रिसर्च करते हैं जो, उसको कहते हैं, ठीक है। उसको एडवांस नॉलेज की एप्लीकेशन को प्रमोट करना। आर एंड डी एक्टिविटीज़ जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ट्राइबल आर्ट्स के ऊपर भी करना, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसकी नॉर्दर्न मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बाइगा ट्राइब। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जोधा बाई जो कि एक सेलिब्रेटेड बाइगा ट्राइबल आर्टिस्ट थी, पद्मश्री अवार्ड भी थी, वो अभी 86 ईयर्स ऑफ एज में वो एक प्रोलॉन्ग्ड इलनेस के बाद वो पास अवे हुई हैं। तो बाइगा ट्राइब क्या है? वन ऑफ द इंडियाज़ पीवीटीजी ग्रुप्स हैं, जो कि छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ट्रेडिशनली ये सेमी नोमैडिक थे, प्रैक्टिस करा है इन्होंने स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन को। ये फर्मेंटेड और डिस्टिल्ड महुआ जो है प्रिपेयर करते हैं, जो कि एक इंटॉक्सिकेंट है, उनके डाइट का पार्ट है। टैटू भी इनके जो है बनाना भी इनके कल्चर में इंटीग्रल है, ठीक है। बैगट फर्स्ट ट्राइब कम्युनिटी थी जिनको हैबिटेट राइट्स इंडिया में ग्रांट किए गए। अब जोधाबाई जो है उनकी कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन उन्होंने बैगा ट्राइबल आर्ट को दिलवाई और उनको पद्मश्री अवार्ड 2023 में ऑनर किया गया था, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साइक्लोन चीडो। ये टॉपिक इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी ने कॉन्डोलेंसेज ऑफर किए हैं विक्टिम्स ऑफ साइक्लोन चीडो को। साइक्लोन चीडो जो है वो रिसेंटली मायोटे, जो कि एक फ्रेंच इंडियन ओशन टेरिटरी है, वहाँ पर स्ट्रक हुआ और मोज़ाम्बिक चैनल में विंड स्पीड्स लगभग 200 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच गई और ये स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन अगर हम कहें तो ये आज तक का था जो कि मायोटे को हिट किया है ओवर 90 ईयर्स। अब मायोटे जो है वो पार्ट है कोमोरोस आर्कीपेलगो का, जो कि सिचुएटेड है मोज़ाम्बिक चैनल में इंडियन ओशन के। साइक्लोन क्या होता है? लार्ज स्केल एयर सिस्टम जो रोटेट होता है लो प्रेशर एरिया के आसपास। नदर्न हेमिस्फेयर में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, सदर्न हेमिस्फेयर में ये क्लॉकवाइज घूमता है ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें काम सेंटर होता है जिसको हम आई कहते हैं। लो एयर प्रेशर का ये रीजन होता है। हाई विंड स्पीड्स होती हैं इसकी, 120 किलोमीटर तक की एवरेज स्पीड इसमें रहती है और ये सिर्फ वार्म ओशन और सीज़ के ऊपर ही डेवलप होते हैं, ठीक है। इनकी जो है मूवमेंट ट्रेड विंड्स द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होती है ईस्ट टू वेस्ट, ओके। इनकी क्लासिफिकेशन जो है साइक्लोन्स की आईएमडी जो है विंड स्पीड्स के बेसिस पर करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आर्कटिक टुंड्रा। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आर्कटिक टुंड्रा जो है वो ट्रांजिशन हो चुका है, कार्बन सिंक था पहले, वो अब कार्बन एमिटर बन चुका है एज पर द आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड। तो आर्कटिक टुंड्रा है क्या? एक वास्ट ट्रीलेस बायोम है जो कि कोल्ड, ड्राई और रॉकी टेरेन है। यहाँ पर परमाफ्रॉस्ट है, मतलब कि परमानेंटली फ्रोजन सॉइल। टुंड्रा सॉइल जो है वो रॉकी और न्यूट्रिएंट पुअर है। आर्कटिक टुंड्रा जो है वो नदर्न मोस्ट बायोम है हमारे अर्थ का। टेम्परेचर यहाँ पर 5 डिग्री समर्स में, -60 डिग्री सेल्सियस विंटर में रहते हैं, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब एक एवरेज टेम्परेचर आप कह सकते हो। तो वेजिटेशन यहाँ पर प्रेडोमिनेंटली हर्बेशियस है बिकॉज ऑफ कोल्ड क्लाइमेट। लार्ज मेंबर्स जैसे कि पोलर बियर्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर।
जबकि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ट्रीज है, फिर भी आर्कटिक टुंड्रा जो है वो एक सिग्निफिकेंट कार्बन सिंक था, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि राइजिंग टेम्परेचर की वजह से जो है वो माइक्रोब्स एक्टिव हो रहे हैं और वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन एमिट कर रहे हैं, ठीक है। आर्कटिक जो है वो 4 गुना तेज़ी से जो है वो इसलिए वार्म हो रहा है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल एवरेज। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये टॉपिक भी आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मोल्डोवा जो है वो उन्होंने रिसेंटली साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ओके, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या? इसको कंसेप्चुलाइज किया गया था COP21 में, पेरिस में 2015 में, बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है और ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करना थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस। इसकी एक मिशन जो है वो टुवर्ड्स 1000 नाम की स्ट्रेटजी है, जिसमें $1000 बिलियन मोबिलाइज करने हैं इन इन्वेस्टमेंट्स सोलर एनर्जी के अंदर 2030 तक। एनर्जी एक्सेस देना है 1000 मिलियन लोगों को। इंस्टॉलेशन करनी है 1000 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी की ग्लोबली, ठीक है। ISA की जो असेंबली है वो एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है इसकी। ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2017 में जो है वो इन्फोर्स हुआ और 2020 में इसको अमेंड करके सभी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स को एलिजिबल कर दिया गया कि वो ISA को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर इसके हम की इनिशिएटिव्स देखें, पहला आपको देखने को मिलेगा कि स्केलिंग सोलर एप्लीकेशंस फॉर एग्रीकल्चर यूज़, जिसके अंदर की सोलर पावर्ड वाटर पम्प्स को एग्रीकल्चर एक्टिविटी सपोर्ट करने के लिए इसमें जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है। दूसरा है ISA केयर्स, जो कि एक इनोवेटिव और रिलायबल सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस दे रहा है हेल्थ केयर सिस्टम्स को लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। अगला है आपका प्रोग्राम ऑन सोलर राइजिंग हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम्स, जो कि हीटिंग और कूलिंग डिमांड्स कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल सेक्टर में जो है फैसिलिटेट करने के ऊपर फोकस कर रहा है। फिर ग्लोबल सोलर फैसिलिटी, जिसको COP27 में लॉन्च किया गया, ताकि सोलर इन्वेस्टमेंट्स अंडर सर्व्ड रीजन्स में और जोग्राफीज़ में अक्रॉस अफ्रीका जो है वो कैटलाइज हो सके। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is reforming national entrance exams. This topic is important for your governance section. So a high-level committee, which is chaired by a former ISRO chief K. Radhakrishnan, has recommended significant reforms to ensure transparency and efficiency in conducting national entrance tests like the NEET, CUET, and UGC NET. So this committee has drawn parallels with general election framework and said that these reforms should safeguard the integrity of examination process and prevent malpractices. So the entire focus is on the national testing agency called the NTA, which was set up in 2017 as a specialist self-sustaining and autonomous organization under the Ministry of Education. It was registered as a society under the Societies Registration Act, and the director general and governing body of NTA is appointed by the union government. Okay, so what happened is that in 2010, a committee comprising directors of IITs recommended establishing an autonomous and transparent body through legislation, which will be modeled on the Educational Testing Service of the US. And this NTA was later formed to conduct efficient, transparent, and international standard tests, undertake research on educational, professional, and testing systems, and also to identify experts and institutions in setting exam questions. Okay, National Education Policy 2022 also endorsed a broader role for the NTA, but there are certain issues as we have seen in the last few months. For example, we all know that computer-based tests are very important because high volume can be processed in a very short period of time. But as the government of India's National Informatics Center does not have the capacity or IT infrastructure to conduct these exams, therefore, the government has to rely on third party technical partners, which are often the private sector ones. So, this takes accountability out of the government's hand and it leaves loopholes in the system which can be exploited by the unscrupulous players. So, the agency was this NTA also is facing shortage of manpower. When it was set up, it only had about 25 permanent staff positions. And if we revert to the large scale pen and paper exams, then we will have so many processes or stages where malpractices can occur as compared to when if we conduct the computer based tests. We have reported irregularities like we saw during the NEET UG exam, which was compromised. Then UGC NET exam was also cancelled a day after being conducted. Okay, so what are the
recommendations that high level committee has given. So it has said that there should be a collaborative approach between center and state governments to conduct these exams, similar to how we manage the elections. So state administrative machinery, including district collectors, can play an important role to ensure smooth execution of these exams. Each testing center will have an NTA appointed body, NTA appointed presiding officer, which will be responsible for overseeing operations, similar to how polling booth management is done during elections. Testing centers must be sealed before exams and unsealed only in the presence of district administration and NTA officials, similar to what we do in election process. To oversee the entire process, we can have state level and district level committees headed by the chief secretary and district magistrate, respectively, so as to ensure identification of secure testing centers. And it should have, at the state level at least, representatives from state police, NTA, IB, and the NIC. Okay, background checks must be conducted for centers so that we can vet them based on their past records. We should phase out the reliance on private test delivery agencies and instead collaborate with Kendriya and Navodaya Vidyalayas. So, inspired by the DigiYatra model, the Digi exam system should also be made so as to ensure candidate verification using biometric data, and continuous CCTV monitoring of candidates should be done during the exam. So, NTA should also focus solely on the entrance exams for higher education and leave recruitment exams for other bodies. Okay. So the next topic is National Investigation Agency. This topic is important for your governance section. So in a boost to NIA's powers, Supreme Court has ruled that powers of agency are not restricted to probing offences mentioned in the schedule of NIA. So NIA, we know it was set up under the NIA Act of 2008 as part of the um, uh, Central Counter Terrorism Law Enforcement Agency. So it was created after the Mumbai attacks of 2008. So it investigates and prosecutes offences affecting the sovereignty, security, and integrity of India. So it can investigate and prosecute offences related to explosive substances, atomic energy, nuclear weapons, unlawful activities, terrorist activities, hijacking, etc. Since 2019, government has empowered the NIA to conduct investigations outside India also through an amendment to the Act. Administration of NIA lies with the Director General, and it comes under the jurisdiction of Home Ministry. Okay. So the next topic is Science and Heritage Research Initiative. This topic is important for your Science and Tech section and Governance section. So Union Minister of Science and Technology has said that fusion of traditional knowledge with modern technology would give India advantage over other countries. Okay, while he has launched this Science and Heritage Research Initiative. Uh, I'm sorry, while celebrating the 5 years of the Science and Heritage Research Initiative. So, this is a new program on heritage research which aims to engage experts from diverse fields for data capture and analysis so as to form new collaborations and provide viable technology so as to address the cultural heritage related issues. So, this scheme has been envisaged to build capacity in human resources and encourage new researchers to work in these areas and to promote scientific R&D activities for conservation of heritage objects, which may include material deterioration process, preservation techniques, intervention technologies, etc. So it will also explore new technologies, state of the art technologies, to preserve the heritage and artworks of former generations as well. It also aims to promote application of advanced knowledge of archaeometric science. It also aims to promote R&D activities and technological advancements in tribal arts for value addition. So the nodal ministry for the scheme is Ministry of Science and Technology. So the next topic is Baiga tribe. This topic is important for your social issues. So Jodhaya Bai, a celebrated Baiga tribal artist and Padma Shri awardee, passed away on December 15th at the age of 86. So Baiga tribe is one of India's PBTG, and they primarily reside in Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Odisha, West Bengal, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh. They are traditionally semi-nomadic and they practice slash and burn cultivation. They Tattooing is integral to their culture, and they also consume fermented and distilled mahua as part of their diet and culture. Baga tribe is the first community in India which was granted the habitat rights, reflecting their deep connection with the forests. And Jodhabai's contribution can be seen through how she brought international recognition to Baga tribal art, and she was honored with the Padma Shri Award also in 2023. Okay.
So the next topic is Cyclone Chido. This topic is important for your environment and international relations topics. PM Modi recently expressed condolences for the victims of Cyclone Chido and pledged support to assist in relief efforts. So this cyclone recently struck Mayotte, which is a French Indian Ocean territory located in Mozambique Channel. So wind speeds reached about 200 km per hour, which made it the strongest cyclone to hit Mayotte in over 90 years. Mayotte is part of Comoros archipelago, which is situated in the Mozambique Channel of the Indian Ocean. What's a cyclone? So, it is a large scale air system that rotates around the center of a low pressure area, and it typically in the northern hemisphere this cyclone rotates anti-clockwise, and in the southern hemisphere the cyclones rotate clockwise due to the Coriolis effect. So, what are the characteristics of tropical cyclones? So, it has a calm center, which is called the eye of the cyclone, which, which remains calm with low air pressure. Then we have the high wind speed also. The cyclones generally have average speed of around 120 km per hour. These cyclones develop over warm oceans and seas only, and cyclones are influenced by trade winds moving from east to west direction. Okay. So the next topic is Arctic tundra. This topic is important for your environment section. So Arctic tundra has transitioned from a carbon sink to a carbon emitter as per the Arctic report card. Arctic tundra is a vast treeless biome which is characterized by its cold, dry, and rocky terrain. So it has what are the characteristics of Arctic tundra? It has permafrost, which refers to the permanently frozen soil. Then the soil is rocky and nutrient poor here. Arctic tundra is the northernmost biome of the world. The temperatures here range from 5 degrees Celsius to minus 60 degrees Celsius in summer and winter, respectively. And vegetation is predominantly herbaceous here. Large mammals like polar bears are found here. Despite the absence of trees, Arctic tundra is a significant carbon sink due to the accumulation of organic matter. But what is happening here is that rising temperatures are activating microbes which are breaking down the organic matter and releasing the carbon dioxide and methane. Arctic is also warming 4 times faster than the global average due to this particular fact. Okay. So the next topic is International Solar Alliance. This topic is important for your environment section. Moldova has officially signed the International Solar Alliance Framework Agreement, and this ISA was conceptualized on the sidelines of COP21 in Paris in 2015 as an initiative between India and France. Its headquarters is located in Gurugram, and the aim is to unite global efforts in combating climate change through the implementation of solar energy solutions. The mission of ISA is guided by the Towards 1000 strategy, which aims to mobilize $1,000 billion of investments in solar energy by 2030. And apart from that, provide it aims to provide energy access to 1000 million people, and of course, achieving the installation of 1000 gigawatts of solar energy capacity. So ISA Assembly is the apex decision-making body of this organization. Then ISA framework agreement came into force in 2017, and following it amendment in 2020, all UN member states can now join the ISA. So let's also discuss the key initiatives of the ISA. First is the scaling solar applications for agriculture use, which addresses the increasing demand for solar powered water pumps to support agriculture activities. Then we have this ISA Cares also, which uh, provides innovative and reliable solar energy solutions for healthcare systems in low and middle income countries. We have the program on solarizing heating and cooling systems, which aims to meet the growing heating and cooling demands in commercial, industrial, and residential sectors. Then we have the Global Solar Facility, which was launched during COP27, which is designed to catalyze solar investments in underserved regions and geographies across Africa. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.